फिर एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना यानी कि उनका वैल्यू फाइंड करना। फिर हमने इक्वेशंस 15.3 किया, तो ये आप रिवाइज कर सकते हो। इसमें वन स्टेप एडिशन, वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन टू स्टेप इक्वेशंस की कुछ एक्सरसाइजेस। फिर हमने लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स की। फिर इक्वेशन पार्ट 2 किया जिसमें वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स था, यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड पे वेरिएबल्स थे। फिर हमने इक्वेशंस विद पैरेंथेसिस किया, पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट्स। फिर हमने इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म किया। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स किए कुछ। फिर हमने ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल किए कि पॉलिनोमियल पे हम उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने फैक्टर्स किए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं उसकी एक्सरसाइजेस की। फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इनमें किसी में डिफिकल्टी अगर किसी को है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। या कोई चीज समझ नहीं आया, जैसे फिर हमने किया ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि अगर दो इक्वेशंस हमारे पास दिए हैं उनको उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया। शाबाश, कोई बताएगा कहाँ पे सारा समझ में आ रहा है या क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है या क्या डिफिकल्टी है। सर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम कराओगे, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वर्ड प्रॉब्लम्स, यस एक मिनट होल्ड करना। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो ना? यस ओके। तो वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। तो हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं आज। क्या कह रहा है? वी वांट टू पुट ए फेंस राउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। The fence costs ₹100 per meter. The length and width of the plot are in the ratio of 9:4. The total cost of the fencing comes out to be 7,800. Find the length of the plot. तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम अलजेब्रा को यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज basically the application of algebra, how we are using algebra. तो हमने क्या सीखा है इसमें, हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो उसको हम एक साइड पे लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन को, और फिर देन व्हाट वी हैव टू फाइंड वी राइट ऑन द अदर साइड। नाउ इफ वी लेट अस ट्राई टू सी दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या गिवन है, व्हाट इज द गिवन इक्वेशन, सॉरी गिवन इंफॉर्मेशन। लेट्स ट्राई टू डू द गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट। शाबाश, बताओ, मैं साथ साथ में बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, then we will try to solve it. सर लेंथ और विड्थ दे रखा है। हाँ, सबसे रेशियो पहले, हाँ, तो हम लेफ्ट साइड में हम
इस प्रॉब्लम की गिवन इंफॉर्मेशन हम एक साइड पे लिखेंगे। हमने स्टेप्स क्या सीखे थे? हमने स्टेप्स सीखे थे कि जो भी प्रॉब्लम है उसके गिवन इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स राइट गिवन ऑन लेफ्ट साइड एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ऑन द अदर साइड। और जो भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम किसी तरीके से यहाँ एक्सप्रेस करेंगे। वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इंफॉर्मेशन, whether that is one information, two or three pieces, and then we whatever we have to find we will write here. और जो भी फाइंड करना है उसको एक वेरिएबल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको हम x बनाएंगे और फिर ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम we will write it in terms of x, and from these three or four or two pieces of information we will create an equation। एक इक्वेशन बनाते हैं। उस इक्वेशन में ये वेरिएबल होना चाहिए x, so that we solve that equation. Once we solve for x, so we will get that answer. This is how we are going to do word problems. अब इसमें फर्स्ट में क्या है गिवन इंफॉर्मेशन? We want to put a fence around a rectangular plot. So पहला हमारे को दिया हुआ है rectangular plot. So you can say this is the first information कि हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है। ये हम पहला इंफॉर्मेशन हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। सो लेफ्ट कॉलम में हम लिख लेते हैं कि एक चीज हमें पता है कि वो प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल है। तो ये मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया जस्ट फॉर माय रिकलेक्शन, मुझे याद रहेगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो रेक्टेंगल है। फिर ये कह रहा है द फेंस कॉस्ट ₹100 पर मीटर। तो कॉस्ट दिया हुआ है कॉस्ट किस चीज का दिया है? फेंस का, फेंस। सो फेंस वर्ड से ही पता चलता है कि अगर मेरे पास इफ आई हैव गॉट अ रेक्टेंगुलर शेप आई हैव टू पुट द फेंस अराउंड द बाउंड्री बिकॉज इट इज मेंशन्ड इट इज अ फेंस। सो हम क्या करेंगे, यहाँ सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं लिखूंगा। एक तो मैं लिखूंगा फेंस और ₹100 per meter. So this is my rate, ₹100 per meter। पर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, डिवीजन। उसके बाद दिया हुआ है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। तो जब रेक्टेंगुलर दिया है तो वी कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल और उसका रेशियो दिया है हमारे पास, ठीक है। लेंथ, हमें रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ए रिलेशनशिप। बेसिकली रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे इस क्वेश्चन में बिटवीन लेंथ एंड विड्थ। सो लेंथ इज टू विड्थ एज 9:4। सो एक इस रेक्टेंगल का जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो 9:4 है। यानी कि अगर लेंथ 9 है तो विड्थ 4 है। अगर 9 इसका डबल है, मान लो ये 18 है, तो विड्थ भी इसका डबल होगा, ये 8 हो जाएगा। इनका रेशियो आपस में 9:4 ही रहेगा, ठीक है। हमें ये रेशियो भी पता है। नेक्स्ट हमारे को दिया हुआ है, सो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी लिख दिया, रेक्टेंगल को भी लिख दिया, फेंस के कॉस्ट को भी लिख दिया, लेंथ एंड विड्थ का रेशियो भी लिख दिया। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग is 7,800।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट फेंसिंग। तो फेंसिंग वर्ड से ये याद रखना है कि ये तो बाउंड्री पे हमें फेंस लगाना है। टोटल कॉस्ट इज 7,800। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द, तो फाइंड के नीचे मैं लिखता हूं वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ प्लॉट। ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ प्लॉट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारे को, व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप? शाबाश, कौन बताएगा? Who will try? Come on, try. Yes, Tanuja, Yukti, Himanshu. Tell me some idea. What should be our first step? Come on, who will try? Sir, if we have to find only the length of plot, then why have they given the fence cost? That is how you have to think, because we have to find only the length of plot. So first step should be, let us put, let the length, what we have to find, let the length be equal to x. So this should be our first step. Now what we have to think, कि left side में, if we get some equation on the left side, if we get some equation here which has, which equation is what? Equation is a relationship between left hand side and your right hand side. That relation should be in terms of x. तो यहाँ पे x आना चाहिए। अब वो रिलेशनशिप कहाँ से, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन, ये इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? This equation you will get from the given information. Now you have to think कि हमारे को लेंथ फाइंड करना है, बट द इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज। यहां भी रुपीज है, यहां कॉस्ट में भी रुपीज है, और लेंथ एंड विड्थ का सिर्फ रेशियो दिया है। सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज योर रेट, दिस इज पर मीटर, per 1 meter, meter is in denominator, so per meter means for every 1 meter the cost is 100 rupees. So this shows, and total cost of fencing is 7,800. और जब fencing, word fencing should give you an idea कि fencing I have to put it around the plot, rectangular plot, that means इसका perimeter पे. So what is the perimeter? So perimeter, from these two pieces of information, maybe you will get some idea about perimeter. And perimeter, you should be able to write perimeter in terms of length, क्योंकि लेंथ भी दिया हुआ है x, और लेंथ एंड विड्थ का रेशियो भी दिया है। दैट मीन्स अगर लेंथ 9 है, या अब आपके इन टर्म्स ऑफ x लिखो, दैट मीन्स इफ लेंथ इज 9x, नाउ सपोज if length is x, what will be width? Suppose length, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है length, let length be x, what will be your width? Who will tell me, Shabash?
if length is x, what will be width? पहले ये first tell me this. Shabash, who will try? Yes, Yukti. Yes, Tanuja, you try. अगर लेंथ x Sir, है 4x. okay, now suppose you are saying if length is x, width will be 4x. 4x तो लेंथ से भी ज्यादा हो गया because length is x and if you say width is 4x that means 4 multiplied by x वो तो width length से भी ज्यादा हो गया width तो हमेशा कम होगा इनका रेशियो दिया है if you concentrate over here the ratio length divided by ratio is what relationship between two things by division यानी कि डिवीजन से हम रिलेशनशिप लिखते हैं अब मैं इसको यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये राइट साइड में तो सिर्फ लेट मी क्लोज दिस यहाँ पे आई राइट ये लेफ्ट साइड में ही कंटिन्यूएशन है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ लेंथ एंड विड्थ सो रेशियो लेंथ अपॉन विड्थ so this is ratio between length and width is equal to 9 upon 4 so if you do cross multiplication that means 4 times length 4L is equal to 9W okay so if your length now length you have already supposed you have kept length as x that means if length is your 4x what will be your sorry if now which is more length or length is more so if length देखो हमें दोनों चीजें इन टर्म्स ऑफ x चाहिए अगर if your length is what is your width let me write it this way this ratio tells us that 4L is equal to 9W because this is the ratio L upon W is 9 upon 4 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से ये रिलेशनशिप मिल गई still the ratio is 9 is to 4 now if my length is x what will be W so W will be इसको मैं यहाँ लाऊंगा 9 को यहाँ ट्रांसपोज करूंगा so this will be L into W upon 9 now length हमने x मान लिया so this is my x so my width is sorry this is 4 upon 9 width is my 4 upon 9 x ठीक है यानी कि जो मेरा width है width को भी मैंने I have written in terms of x and length तो है ही x अब इससे फायदा क्या हुआ या तो आप ऐसे लिखो कि अगर if length is x then width is this much or straight away you can say if length is if your length is 9x width will be 4x तभी तो ये रेशियो 4 9 is to 4 होएगा length has to be more than your width या तो आप इसको मान लो
या अगर आपने x रखा है तो आप ऐसे भी रख सकते हो. इफ योर लेंथ इज x, width will be 4/9x. इससे you will find the perimeter. So what will be your perimeter of this rectangular piece? P. P will be, shabash, P perimeter will be twice, 2 times your length, 2 times length plus width. This is your perimeter because यहाँ से if you see इसको आपने if you have kept length as x, then you will find width in terms of x, because this you are using this piece of info. जितने भी आपको ये piece of information दिए उनको आपने यूज करना है. इसको अगर मैं एक नंबरिंग ठीक करता हूं. Let me keep it. If this is my second piece or third piece of information, this is my fourth piece of information. First piece of information is that it is a rectangle. Second piece is that the cost of fence is 100 rupees per meter. Third piece of information is length and width का ratio ये है. Fourth piece of information है total cost ये है. So let us try to use all these 4 piece of information. ये जो if x is L, then width is 4/9x. ये information कहाँ से मिली मेरे को? By using the third piece of information, which gives me the ratio. इस ratio से now I have got my perimeter. P is equal to twice my length plus my width. अब देखो इसमें इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे आपको यहाँ वेरिएबल कितने, एक तो x है लेकिन लेफ्ट साइड में भी अभी p है. इट इज स्टिल ए अल्फाबेट, ए लेटर. इट इज नॉट ए नंबर. So that means this equation has two variables. एक तो x है और एक p है. तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है. You can solve when you have only one variable. That means ये जो p है, let me convert this into some number. So instead of p, there should be some number. वो number कहाँ से मिलेगा? For that हमने again we have to see what all information is given. So हमने ये information जो perimeter is twice length plus width, this piece of information, how did we find this formula? By using the information that I have got a rectangle. So I have used this information, I have used this ratio. Now second and fourth I have to use. Is it clear? अभी तक हमने क्या क्या यूज किया? हमारे पास 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थे, उसमें से हमने इसको यूज कर लिया, हमने रेशो को यूज किया. अब हम सेकेंड एंड फोर्थ को यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे? उससे मेरे को p मिल जाएगा. फ्रॉम देयर इफ आई गेट माई p नंबर, then I can solve this equation to find x. Now this p is your perimeter. अब ये perimeter कहां से मिलेगा? Now try to use information 2 and information 4. Can you guess? Can you try? देखो टोटल जो फेंस का रेट है, दैट इज ₹100 पर मीटर.
और उसका टोटल कॉस्ट 7,800 है. दैट मीन्स 7,800 has lot of meters because that is the total cost of fencing. अगर मैं एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाऊंगा, let me show you pictorially, that will make it easy. Suppose this is your rectangular plot या field. जब इसमें आप फेंसिंग करते हो, यहां से आपने फेंसिंग किया, ये फेंसिंग स्टार्ट किया और ये यहां पूरा कंप्लीट किया, you will be spending how much? You are spending 7,800. That means इसका टोटल कॉस्ट इस पूरे लेंथ का, पेरीमीटर इज बेसिकली लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसका पूरा कॉस्ट इज 7,800 रुपीज. और जो सेकेंड इंफॉर्मेशन है, सेकेंड है 100 रुपीज पर मीटर. उसका क्या मीनिंग है कि हर मीटर का फॉर उसका जो रेट है, रेट इज ₹100 per meter. For every meter, the rate is 100 rupees. And you are spending total of 7,800 rupees. So how many meters have you bought? बताओ. If this is a question that आपने total 7,800, 7,800 rupees you have spent. And for each meter, each 1 meter, per meter means for every 1 meter, you are paying 100 rupees. So that means how many meters have you bought? Shabash. Now this is easy. Huh? Who will tell me? Yes, Himanshu. Yes. बताओ. If you have spent, अगर आपने 7,800 rupees खर्चे इसको फेंसिंग करने में, फेंसिंग मीन्स पूरा पेरीमीटर में, यहां से स्टार्ट किया, आपने फेंसिंग लगाया, and you have spent 7,800 rupees. And for 1 meter, you are spending 100 rupees. So how many meters have you bought? शाबाश, कौन बताएगा? This is very simple. 78. Yes, 78 meters. Because for 1 meter, you are spending 100 rupees. For 78 meters, you will pay 78 multiplied by 100, which is 7,800. So ये जो 78 meters है, ये basically क्या है? ये तो पेरीमीटर मिल गया आपको. समझ में आया? Is it clear to everyone? Give me a thumbs up if you are able to understand. Okay. Is it clear, Himanshu? Yes, sir. So from second and third, from your second information and from your fourth information, when you are using these two information, इन दो को आपने यूज किया, उससे आपको पता चल गया पेरीमीटर P.
सेकेंड एंड फोर्थ से आपको P मिल गया. So your P is 7,800 is total cost. For 1 meter it is 100 rupees. So this is 78 meter. अब आप इसको देख लो. अब देखो, इससे आपको इस इक्वेशन में एक वेरिएबल x है, दूसरा p है, लेकिन यहां से आपको फ्रॉम यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग p. सो इस p को यहां डाल दो. सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, left hand side of equation is your this p is your 78. So therefore 78 is equal to 2 multiplied by x plus 4 upon n 9x. And now you can solve this equation. How will you solve this equation? Because now there is only one variable. There is only one variable which is x. In this equation only x is there. ये जो p था, ये हमने p हटा दिया, हमने एक number, we have found number. Now you can solve this equation to find x. And that x will be your, what you had to find, length of the plot. ठीक है, is it clear? So ऐसे आपको ये different type of word problems होंगी. जैसे हम एक और word problem देख सकते हैं. अब क्या कह रहा है ये? The sum of digits of a 2-digit number is 9. The sum of digit of 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 45. What is the 2-digit number? बताओ. इस टाइप के, again what you have to do, again you have to follow the same steps. Steps क्या है? Steps हैं कि हमारे को we should make 2 columns. We should write given information and what we have to find. Whatever you have to find, put it equal to x. Whatever given information is there, 1, 2, 3, 4, जितना भी information दिया है, try to write them in some mathematical language, in some algebraic. और जो इस इन information में whatever the relationship is given, from there you find some equation. You write an equation. Write equation in terms of x. Write equation in terms of x. और ये equation means what? Equation means relationship. Basically equation is what? That left hand side is equal to your right hand side. और ये जो relationship है, ये कहाँ से मिलेगी? ये इन जो भी given information है, इनमें से ही you will find the relationship. From these whether it is 2 piece of information, 3 piece of information, from there you should try to find the relationship.
relationship you write in form of equation, and then you solve the equation to find your x. So this is a general methodology. ये ऐसे एक steps हैं जिससे आपको उन word problem को you can break it. ठीक है? Will you try this question yourself? अब ये simple question है. The length of a rectangle is 3 centimeter more than width. If its perimeter is 34 centimeter, find its length and width. So now we have to use our knowledge of algebra and equations. तो हमने क्या सीखा है? हम पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. Let's divide it into two parts. Given information and what we have to find. We have to find its length and width. तो किसी एक को आप length, किसी एक को, because you have to find both length and width. Now if you keep one thing as x, let width be x. अब given information में लिखते जाओ आप 1, 2, 3, whatever is you find from this statement. जैसे first statement में क्या लिखा है? Length of rectangle is 3 centimeter more than the width. So इसको हम we can translate this into our expression. Now length is 3 centimeter more than the width, और width हमारा x है, तो length कितना होगा? अब तो बहुत सिंपल हो गया है. अब आपके पास what is given information? Length is given, perimeter is also given 34 centimeter. Now you can find the equation. अब length कितना होगा? Length is, now we have utilized this piece of information. ये तो हमने लिख दिया. First one, जो length is of rectangle is 3 centimeter more than width. So length is equal to 3 centimeter more. 3 centimeter more than width. So length कितना होगा? 3 plus more than width. If width is x, so length will be 3 plus x. So now you have both. You have length, you have width, you have perimeter. So now it becomes very easy. You will have to find an equation. Write an equation which gives relationship, and that equation should have x. Then you can solve x, and it should have only one variable, only x. कैसे करोगे? You can draw that rectangle. हाँ बोलो. Width अगर x है तो length is x plus 3.
ये फर्स्ट वाला 3 plus x लिखो या x plus 3 लिखो. So what will be your perimeter? So So 34. हाँ, पहले पेरीमीटर को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो इस डायग्राम से. पेरीमीटर विल बी 2 times length plus width. अब ये इक्वेशन मिल गया आपको, बट फिर से जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, इस इक्वेशन में one side you have x and other side you have p. So there are two variables, so you have to remove one variable. Now p you have second piece of information is 34. So यहाँ पे you can, instead of p you can write 34. So your third equation is 34 is equal to 2 times length plus width. और इस इक्वेशन से you will get x. Once you get x, you will get x is your width and length will be 3 plus x. जो भी x मिलेगा वो x plus 3 आपका length मिल जाएगा. So both the things you will get. Okay. So इस वीडियो में I will upload it on YouTube, word problems, and then you will have, I'll put some questions also, and then you can practice those questions. Okay. So we can stop here.